touching lives by enlightening them. Vikran, we enlighten lives. Vikran Engineering and Exim Private Limited's proven reliability began in 2008. It is an EPC company specializing in power transmission, substation and power distribution projects. Vikran also successfully brought electricity to Agarpur village in Bihar, which was without electricity for the past 80 years. Vikran Engineering has excelled in enhancing its reputation by offering many integrated end-to-end services, from evacuation of power from power generation plants to providing power supply and meter connection to end consumer within this premier time span from its inception. Since then, Vikran Engineering and Exim Private Limited has been an integral and emotional part of common lives by providing power to various parts of the country. Vikran Engineering and Exim Private Limited, Together We Will, was incorporated in June 2008 with over 5 regional offices and 16 site offices in India. Vikran Engineering has its head office in Mumbai and is planning to open its offices in Delhi NCR and Bengaluru. Currently, Vikran has been awarded projects worth 620.51 crores. We are honored to have Mr. Rakesh Madkhedkar as our Chairman and Managing Director. He is also the Vice Chairman of CII, Confederation of Indian Industry, and the Executive Council member of the Prime Minister's Office for Make in India project. An IIM Bangalore and BITS Pilani alumni, Mr. Rakesh Madkhedkar has been the CEO at Bajaj Electricals Limited, Era Group, Emco Limited, and country head at Voltage Engineering Limited, Qatar, before starting his own company. Under the wise leadership of Mr. Rakesh Madkhedkar, the company has sailed heights in growth and expansion and will soon be targeting the African energy market. Mr. Rakesh Madkhedkar's exceptional managerial qualities also earned him the youngest CEO title of India Power and Infra sector in 2006. The able leadership of Mr. Rakesh Madkhedkar has characterized the company's professionalism at sky-high standards. In this short span, Vikran has received 2 awards from the international community dedicated to the hard work put in by the whole team. The Economic Times Most Promising Business Leaders of Asia for demonstrating most exemplary leadership qualities, which was presented by the Prime Minister of Singapore and Prime Minister of Malaysia on 29 November 2017. Fastest Growing Indian Company Excellence Award from Her Highness Princess of Thailand at the 8th International Achievers Summit 2016. Here are a few awards given to Mr. Rakesh Madkhedkar in the past. The Mekonomy Award 2015, ET Infra Award, Infra Persona of the Year 2013, 2014 and 2015, Young Achiever Award 2009. He has also been called as the turnaround specialist for his excellent performance at Emco, KEI Industries and Bajaj Electricals Limited by Ambit. The mission of Vikran Engineering and Exim Private Limited is to achieve a turnover of 400 plus crores by the financial year 18-19. Achieving this mission is only possible by executing the projects on fast track and thereby cutting down the project execution cycle by 25%. Microplanning will play a key role in this task. Our consistent effort is to balance these 4 pillars: employee satisfaction, maintaining customer-client relationship, timely project completion, long-term sustainability. We are already on the path to establish ourselves as an emerging, healthy and dependable organization in the market, and also to build a high-trust workplace at our organization. Employee comes first is a belief and practice of Vikran.
Vikran creates young visionaries by supporting youth employment. The value system of Vikran strongly engages towards result orientation. Trust and integrity are Vikran, touching lives by enlightening them. Vikran, we enlighten lives. Vikran Engineering and Exim Private Limited's proven reliability began in 2008. It is an EPC company specializing in power transmission, substation and power distribution projects. Vikran also successfully brought electricity to Agarpur village in Bihar, which was without electricity for the past 80 years. Vikran Engineering has excelled in enhancing its reputation by offering many integrated end-to-end services, from evacuation of power from power generation plants to providing power supply and meter connection to end consumer within this premier time span from its inception. Since then, Vikran Engineering and Exim Private Limited has been an integral and emotional part of common lives by providing power to various parts of the country. Vikran Engineering and Exim Private Limited, Together We Will, was incorporated in June 2008 with over 5 regional offices and 16 site offices in India. Vikran Engineering has its head office in Mumbai and is planning to open its offices in Delhi NCR and Bengaluru. Currently, Vikran has been awarded projects worth 620.51 crores. We are honored to have Mr. Rakesh Madkhedkar as our Chairman and Managing Director. He is also the Vice Chairman of CII, Confederation of Indian Industry, and the Executive Council member of the Prime Minister's Office for Make in India project. An IIM Bangalore and BITS Pilani alumni, Mr. Rakesh Madkhedkar has been the CEO at Bajaj Electricals Limited, ERA Group, Emco Limited, and country head at Voltage Engineering Limited, Qatar, before starting his own company. Under the wise leadership of Mr. Rakesh Madkhedkar, the company has sailed heights in growth and expansion and will soon be targeting the African energy market. Mr. Rakesh Madkhedkar's exceptional managerial qualities also earned him the youngest CEO title of India Power and Infra sector in 2006. The able leadership of Mr. Rakesh Madkhedkar has characterized the company's professionalism at sky-high standards. In this short span, Vikran has received 2 awards from the international community dedicated to the hard work put in by the whole team. The Economic Times Most Promising Business Leaders of Asia for demonstrating most exemplary leadership qualities, which was presented by the Prime Minister of Singapore and Prime Minister of Malaysia on 29 November 2017. Fastest Growing Indian Company Excellence Award from Her Highness Princess of Thailand at the 8th International Achievers Summit 2016. Here are a few awards given to Mr. Rakesh Madkhedkar in the past. The Mekonomy Award 2015, ET Infra Award, Infra Persona of the Year 2013, 2014 and 2015, Young Achiever Award 2009. He has also been called as the turnaround specialist for his excellent performance at Emco, KEI Industries and Bajaj Electricals Limited by Ambit. The mission of Vikran Engineering and Exim Private Limited is to achieve a turnover of 400 plus crores by the financial year 18-19. Achieving this mission is only possible by executing the projects on fast track and thereby cutting down the project execution cycle by 25%. Micro-planning will play a key role in this task. Our consistent effort is to balance these 4 pillars: employee satisfaction, maintaining customer-client relationship,
timely project completion, long-term Hello. sustainability. We are already on the path to establish ourselves as an emerging, healthy and dependable organization Hello. in the market, and also to build a high-trust workplace at our organization. Employee comes first is a belief and practice of Vikran. Vikran creates young visionaries by supporting youth employment. The value system of Vikran strongly engages towards result orientation. Trust and integrity are Vikran's flag. Yes, yes. Hello. Good evening, friends. Hope you have enjoyed the trekking और सब लोग आराम करके अभी now we are back here for the Vikran's vision way forward. So I would like CMD sir to please address the Vikranians way forward. Thank you. Good evening, one and all. So again, I'm going to ask the same question what Abhishek has asked. Hopefully, you are all enjoying this 3 days outage. Yes? A big yes to this? A very big yes to this? Good at it. It is very well needed, my friends. It is very well needed. Because in day-to-day work, we are so tense. We are so focused on our day-to-day working. We are so focused on our objectives. And of course, without saying it, a very tough competition and a huge pressure across. So, we need to charge ourselves sometimes. So, at Vikran family, we have a scheduled trip every year during rainy season. So we are just past today. Tomorrow we have, the whole night we have. So we have enough time to enjoy ourselves. Right? Good, good. So this is what we are going to talk today is the town hall meeting. And this I have stolen this slot of 1.5 hours from your this very testy schedule. Right? So please forgive me for that. And let me welcome you all and to all my Vikranians who are listening to me across the country at various project sites and regional offices. Good evening, you all. Good evening. So, yes, please go ahead. When our value system, now I want you, everyone of you, to focus on our value and the vision and values of the Vikram. Need not to mention, need not to explain, you all know what is the importance of this. But for me, as head of this family, and I believe every one of you, we have very, very strong our opinion and our faith, trust and believe on this. Right? So now let us talk and read, listen carefully what is our vision. To recognize as India's premium fast-track project execution EPC company. Premium. Boss, there are n number of companies in country. If you list total EPC in the country, there are more than 150 EPC companies in the country. And the company which is known
and which we can count on fingers are how many? Hardly 30. In our segment where we are concentrating, there are hardly 8 to 10 companies are there. They have those who have earned a good name and recognition in the country. And they are believed to be the class companies. And we call them in a other word premium company, where they can take a premier, right? So what, we are very clear. We don't want to be in the race of hundreds company. Where we want to be ourselves? Top 10 to start with premier company of the country. In the areas of extraction infrastructure, that is nothing but power and water, and transportation infrastructure, that is nothing but railway, metros, airport, etc. That all falls under transportation infrastructure. So, good thing is this. Why I take this opportunity to talk to you again and again? Because it is a law of psychology. It is law of nature. When we talk, when we have some sankalp in our mind and repeatedly we write, we read, it registered in our brain, right? संकल्प से सिद्धि, जैसा हम संकल्प करते हैं वैसे वैसे सिद्धि प्राप्त होती है. सो जैसे जैसे हम सोचते हैं, जो जो हम whatever we write in our brain, we start working in that direction, we start acting accordingly, and we get accordingly all results. So that is the reason we need to talk and focus on what we are looking for in our company. Values. Of course, customer satisfaction is our topmost value. Trust and integrity within the company and outside. All our business operation, we advocate, Vikran, one of the value is trust and integrity. So, slowly, ये सब हमारे ब्लड में आना चाहिए. We as a Vikran family, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है. This is needed to put in all our day-to-day operation. Whatever we talk, whatever we commit, whatever we represent, wherever we do go and represent ourselves, these things has to be in our mind. Ki boss, these are my value systems and I am guided to work, talk accordingly. Right? Third is result orientation. Whatever processes you have, a good processes, whatever attribute you as an individual or we as a company, we have attribute within us. Unless we bring that all these things, unless we convert in the result, it is of no use. So, result to dena hi hai. So, unless we bring this in our value system की चीज और मैं बता रहा हूं. Why the value system? Result, we need to bring it result, but unless it go very inside, deep of our heart and our mind, it is not going to come. So that reason it is in value system. And the most important, this is what we practice and we advocate, we talk right from top to the bottom in the organization, maintain anger-free environment. Hello? You know? I mean it. We are all human beings. गलतियां होती हैं, हमसे भी होती हैं. But unless we control our anger, we will not be able to give the correct direction to our day-to-day work. We will not be very honest with our efforts, what we are talking. When we are not able to control our anger, we are defocusing from our directions. We are not committing ourselves. Lot of adverse effects are there. So we need to maintain anger-free environment. We don't allow even the project managers to shout on any laborers or officers, supervisors, engineers. Effective communication, talking, giving the direct
मैसेज इज द की। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है सुनने तो भाई एंगर फ्री एनवायरमेंट है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय एंगर फ्री एनवायरमेंट। सो दिस इज व्हाट। नेक्स्ट प्लीज। I am repeating this. I am repeating this every time, value and vision, because this is very, very important. We want everyone to atmasat those words in our day-to-day operations. ये दिखाने के लिए नहीं है, ये कर्तव्य परायणता के लिए है। हमको इसको, ये संकल्प को हमारे मन में रखना है, and we need to really act accordingly. If we wanted to become a premier world class company, धीरे धीरे वर्ल्ड क्लास कंपनी भी बनेंगे ना। We started participating in international tenders and with the world class, we are started competing with the world class company. तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी वैसा ही होना चाहिए, बराबर ना? Yes. So most important side. What is the purpose of our business? Why we are in business? We want to spend 5 minutes now on this. Why we are in business? I want to invite 2-3 opinions. Voluntarily, please. Why we are in business? Yes, please. Why we are in business? इतना टाइम नहीं लगता। Yes, Mukesh, give a big hands to Mukesh. बताइए। When we set up some enterprise or set up some businesses, it gives an opportunity, it gives us a way to serve the society. People will say that he's a capitalist, but that's not the fact. If he shuts down his shop, he shuts down his industry, you think what happens? So it's a way to serve the society. Thank you. क्या बात है। और one more opinion. Yes, please. The big man, finance man. To maximize wealth of all stakeholders, including government. क्या बात है यार, so nice of you, very nice. Promoter and employees. Fantastic, fantastic. One more attempt, please. One more thing. हिम्मत करो यार, we all सब अपने ही आदमी हैं। हेलो, पीछे से our young managers. Yeah, you are still young, yes. We are in this business to serve the nation. Yeah, okay, fantastic, good. So my friends, the whole purpose of business is to create value to all our stakeholders, है ना? पैसा तो सभी कमाते हैं, पैसा तो बहुत से तरीके हैं कमाने के, लेकिन द होल पर्पस, वेरी रियलिस्टिक जेन्युइन पर्पस, जिसका ये पर्पस है वो बिजनेस सस्टेन होगा। टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ये सब ठीक है, अनलेस यू क्रिएट एंड एनहांस अवर स्टेक होल्डर्स वैल्यू। हु आर द स्टेक होल्डर्स? लेट अस सी। जब तक उनके इंटरेस्ट में हम लोग काम नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड नहीं होगा। प्रोजेक्ट मिलेंगे, वी विल बी सेटिंग आवर प्रोसेसेस, वी विल बी सेटिंग आवर the departments, will be bringing the project, will be earning the money. But what is the guarantee to sustain? Unless we create a organization which has a vision, mission, values and purpose, we are not going to sustain for a long. So what we are building at Vikran? A value-based organization, the organization which create
a value to all our stakeholders, to all our stakeholders. This should be the purpose, and this is the purpose of Vikran. Any doubt? Any doubt? Are we clear? Yes. All the best. Next, please. So, that is the reason we have formulated our mission statement. What is our mission statement? We create values to our stakeholders. तालियां बजाओ इसके लिए. हमने बहुत ब्रेन स्टार्मिंग की, डिस्कशन किया. I talked to at least 10 management gurus across the globe. Hello? Across the globe. I talked to them personally. I studied, understood. मिशन क्या होना चाहिए? तो अपना मिशन बहुत सिंपल. एक्चुअली विजन, जो मिशन का एक सिंपल होता है, व्हाट इज मिशन? जो ओरिजिनल हो, ओरिजिनल, नो कॉपी पेस्ट, जो फंडामेंटली करेक्ट हो, जो मेमोरेबल हो, एकदम आत्मसात करे, रिमेंबर हो जाए आपका, और जिसको आप अपने टी शर्ट पे लिख सकें. हेलो, ये सब क्वालिटी दिख रही है इसमें? Can you write this on your mind and on your t-shirt? So let us read collectively. We create values to our stakeholders. ठीक है? ध्यान में रहेगा? तो ये अपन किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने स्टेक होल्डर्स के लिए. Whom we are working for? Correct. So who are all our stakeholders? Customer. Timely delivery of quality project. Timely, बहुत संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में, बहुत स्पेसिफिक एक्सप्लेन किया है इसको. टू टाइमली डिलीवरी ऑफ क्वालिटी प्रोजेक्ट. कस्टमर खुश हो जाएगा उससे? यस ना? नेक्स्ट, एम्प्लॉइज, ग्रेट प्लेस टू वर्क. व्हाट इज मीन बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क? अवार्ड लेने के लिए नहीं, यहां से आवाज आना चाहिए कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, रियली दिस इज द ग्रेट प्लेस टू वर्क. सो this is a equally opportunity provider organization. Number one, we get the platform to demonstrate, we create a platform to demonstrate my time, money and efforts, and I can plan my business, I can plan my career in this organization. ये जब तक बिलीफ अपने को अंदर नहीं आएगा, each and every, I was just going through the research and the reports. Bhai, is it possible to get this feeling to 100% employees? No. लेकिन more than 78% of our employees, if we randomly select and they say yes, my career is assured, I am sure the management and the company will take care of my growth plan. If I have that feeling in my mind, I am able to perform here. मुझे टेंशन फ्री बहुत से काम करना है. I am coming to that. We are not today here. लेकिन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि व्हाट इज मीन बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क. तो माने ये सब फीलिंग भी आना चाहिए, वो पेपर में भी आना चाहिए, एंड everyone has to work in this direction to achieve this target. So this is one of the most important stakeholder of business.
आप इक्विपमेंट्स बाहर से खरीद के लेके आ सकते हो. You can bring thousands of the projects from various industries. You can replace the customers. But the best important is the most valuable stakeholder of the company is employees of the company. उनको जब तक हम शेप में नहीं डालेंगे, it is hard to believe, right? Hello? लेकिन करना है. ये वीड़ा उठा लिया है जो हमारे 3-4 मेजर फोकस एरिया कंपनी में है. दिस इज वन ऑफ देम. द लास्ट स्लाइड विच इज 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज क्रिएटिंग दिस प्लेस, द विक्रान ग्रुप, एज ए ग्रेट प्लेस टू वर्क. नेक्स्ट, सो commitment of overall growth, harmonious work culture and job satisfaction. 3 major elements हम लोग इसमें एड्रेस करने वाले हैं. There could be thousands of the things, but we will be covering these 3 major elements. दूसरा एलिमेंट है harmonious work culture. उसमें सब चीज आ जाती है mostly. My dear friends, last week I was sitting before coming to this, one of the consultant. And let me tell you, it has been almost finalized to how to bring this entire focus, how to take up this internal assignment to enhance that confidence level between our team members. Yeah, we wanted to make this place to a great place of work. Business associate, ऑथेंटिक बिजनेस रिलेशनशिप, बहुत ही प्यारा वर्ड है. कुछ डिजाइन इंजीनियरिंग करते करते मैंने भी इसमें डिजाइन इंजीनियरिंग की है कि बॉस व्हाट इज ऑथेंटिक डिजाइन. दो वी आर सिलेक्टेड इट, उसके बाद भी काफी मैंने सोचा कि व्हाट इज मीन बाय ऑथेंटिक बिजनेस रिलेशनशिप. भाई पैसा फेंको, तमाशा देखो, काम लो, पैसा दो, टाइम पे ये करो, लेकिन नहीं. उसके बाद जो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है बिटवीन आवर सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, होम से आवर बिजनेस एसोसिएट्स हैं, दे शुड हैव दैट फीलिंग, यस दिस इज द कंपनी वेयर शुड आई गिव ए प्रायोरिटी. जैसा अभी कस्टमर अपना धीरे धीरे अपने फेवर में बहुत बात करते हैं, मैं कम ही बोल रहा हूं, लेकिन फैक्ट तो यह है कि कस्टमर्स आर हैप्पी विद अस. लेकिन सेम वे ऑल आवर बिजनेस एसोसिएट्स, दे शुड थिंक यस दिस इज माय first priority. If I have to deal, Vikran is my priority. ये जज्बे के साथ साथ ये हमको इतना अच्छा काम करना है एज ए टीम, so that and society in large, जैसा मुकेश has told us, either through CSR, हम लोग ऐसा काम करते रहे कंटिन्यूस. अभी हम लोग बहुत 2 इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हमारे साथ है. वी हैव ए डायरेक्ट कनेक्ट विद द सोसाइटी. घर घर बिजली पहुंचा रहे हैं, लाखों कनेक्शन दे रहे हैं. वी आर लेइंग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन, वी आर लेइंग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन. वी आर डूइंग, अभी घर घर पानी भी पहुंचाने की अपन मिशन में है. सो ये अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर प्लानिंग टू हैव ए गुड CSR एक्टिविटी ऑल्सो. तो ये जब तक ये चारों एलिमेंट्स प्रॉपर एड्रेस नहीं हो पाते, तब तक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि वी आर क्रिएटिंग ए वैल्यू टू अवर स्टेक होल्डर्स. आई स्पेंडेड 7 minutes on this, presuming that कि we all, my complete family of Vikran is listening to me, and this is very, very important aspect for us. Next, please. Vikran mantra. लोग बात पूछते मेरे से पूछते हैं यार कि हमने विजन देखा है, मिशन देखा है, वैल्यू सिस्टम देखा है, और ये मंत्र क्या होता है, ये मंत्र क्या होता है. तो मैंने कहा बोल, ये मंत्र जो है ये हमारी जड़ों में है, ये हमारे नेचर में है. जो व्हेन वी टॉक अबाउट विक्रांत फैमिली, वी ऑल, दिस इज हमारे रग रग में होना चाहिए.
और इसके बेसिस पे फिर बोलते हैं वैल्यू सिस्टम क्या है, तो वैल्यू सिस्टम है ये मंत्र, हमारे ये सक्सेस मंत्र है, वेरी स्पेसिफिक tactics to distinguish ourselves among others. So what are those? Together we will, जो कंपनी की टैगलाइन है. टुगेदर वी विल बोलने से नहीं आती, कंटिन्यूस एफर्ट से आती है. जो हम लोग इस प्रोग्राम में हैं, दिस इज वन ऑफ द एफर्ट्स टू कोलैबोरेट विद इन अस, टू जेल विद इन अस, to know each other properly, to understand our feelings, to understand we as an individual, to understand we as a group, we as a group. So, together we will. जो भी हमारे decisions होते हैं, जो भी हमारे important matters होते हैं, we talk to each other, and if we decide today together, we will be able to definitely achieve it. This is together we will. जो जज्बा है, ये मंत्र है. अनलेस ये हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा, मुश्किल है. तो ये राइट फ्रॉम द डे वन इन विक्रांत वी आर एडवोकेटिंग, वी आर प्रैक्टिसिंग, नॉट एडवोकेटिंग, वी आर प्रैक्टिसिंग. टुगेदर वी विल. कलेक्टिव विजडम. Everybody is very intelligent, knowledgeable, resourceful. If we integrate all this resourcefulness, it will multiply by millions. सोचो जरा. X to the power infinity is collective wisdom. एक्स वाई जेड सबकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज को कलेक्टिवली दे सिट अक्रॉस द टेबल, दे टॉक, दे कंसल्ट ईच अदर, दे यूटिलाइज देयर विजडम एंड दे कम टू ऑन ए प्लेटफॉर्म एंड दे टेक ए डिसीजन कलेक्टिवली यूजिंग कलेक्टिव विजडम. देन you are going towards a right solution acceptable to everyone, and it is for the company. Hand holding. Nobody is perfect. Nobody is perfect. We as a team, we need each other's support at every time. I am making the word every time. We need each other's support. Nobody is perfect. Nobody is Purushottam. If I have to get my job done, wherever I am failing, my team member is lagging, it's my responsibility to handhold him, to give him a direction again and again, again and again, again and again. Hello? Any question on this? Very, very important aspects. Distributed leadership. माने क्या है? Right from the CEO to the supervisor who is supervising directly on the job, unless he is feeling he is empowered, he is a decision maker and he is contributing for the job, this ownership will not come. Distributed leadership is nothing but ownership across the organization from top to the bottom. Hello? Any question on this? Good. हम होंगे कामयाब. What is this? ये स्लोगन उठा के डाल दिया, हम होंगे कामयाब एक दिन. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. ये बॉस, जब तक ये जज्बा हम होंगे कामयाब, कोई संकोच रखना ही नहीं है. Not a 0.1% doubt on our objectives, our plan, whatever we want to do. If you are firm, मुझे कामयाब होगा ही, होना है नहीं, मैं होगा ही कामयाब, हम होंगे कामयाब. ये साइकोलॉजी का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, कि बॉस जब तक
आप कोई दिमाग में संकल्पित नहीं करते, जब तक आप सोचेंगे नहीं और उसको पेपर में नहीं लिखेंगे, आप पेपर पे लिखते हैं तो डबल एक्शन होता है. यू थिंक इट, देन यू राइट ऑन पेपर, देन यू रीड एज एन एवरी टाइम. जब भी बात होती है आप उसको लिखते हो, पढ़ते हो, तो यू आर गिविंग एवरी टाइम कमांड टू योर ब्रेन. जब हम होंगे कामयाब, ये दृढ़ संकल्पित होगा हमारे मन में, वी आर ऑल डैम श्योर ये होना ही है, तब वो जरूर होगा. तो दिस इज वन ऑफ आवर इंपॉर्टेंट मंत्र. एंड ऑफ कोर्स टू बी रिमेन इन कॉम्पिटिशन, टू रिमेन इन बिजनेस, टू डिस्टिंग्विश अवर सेल्फ, एक स्पीड एक ऐसी चीज है जो आपके द्वारा आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस मंत्रास ऑफ विक्रांत मंत्रा. नेक्स्ट प्लीज. इसमें मैं जानबूझ के टाइम देता हूं ताकि ये क्या है कि ये जनरली व्हाट दिस इज अ फैशन टू शो 3-4 स्लाइड्स, बट हियर वी मीन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. When we are talking to each other, when you are sitting in the desk, when you are interacting with your subcontractors, your business associates, so all this thing has to be in mind. You are representing your company, and the company is guided with some mantras, some value system in mind. इसका मनन करते रहें बीच बीच में. Now, coming to the business. Dear friends, we have completed 6 years of our operation, and we rose from nowhere to a respectable level now, 480 crore today, in a 6 years of time. Top line बनती है, bottom line बनती है, but once you grow, responsibility also increases. तो हमको मैच्योरिटी बढ़ाना पड़ेगी. We need to strengthen ourselves continuously. We need to strengthen ourselves continuously. और बहुत अच्छी चीज ये है कि whatever you people have planned so far in last 5 years, believe me, whatever you have planned, give a big hands to yourself, you achieve all till date. ये वो पावर है, हम होंगे कामयाब का पावर है. आपने सोचा था कि मैं ये मेरे हर साल में इतने फिगर्स आएंगे, वो आपके फिगर आए. टॉप लाइन 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ आते गए. आपने सोचा मेरी बैंकिंग लिमिट बढ़ेंगी, बढ़ती रही. आपने सोचा कि मुझे कस्टमर बढ़ते रहेंगे. पहले 1 से शुरू किया, 2 कस्टमर, 3. फिर आपने सोचा यार मैं सब स्टेशन भी करूंगा, ट्रांसमिशन लाइन भी करूंगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी करूंगा. वो भी आपके प्रोजेक्ट आते रहे, क्लोज होते रहे. फिर आपने सोचा कि मैं 400 केवी पे जाऊंगा. आप लोगों को सालों लग जाते हैं. आपने 400 केवी सब स्टेशन किया. फिर आपने सोचा साहब मैं तो 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन भी करूंगा. आपने ट्रांसमिशन लाइन भी खड़ी कर दी. फिर आपने सोचा कि मुझे जीआईएस में जाना है, तो आप जीआईएस में भी चले गए. फिर आपने सोचा कि मुझे बॉस अभी मेट्रो में जाना है, रेल में जाना है, आप वहां भी पहुंच गए. आपने सोचा कि मैं वाटर में जाऊंगा, आप वहां भी पहुंच गए. ठीक है, पहुंच गए हैं, लेकिन अभी ऑर्गेनाइजेशन जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, हमको बहुत अच्छे से संभालना है. अपने को बहुत मजबूती देना है ऑर्गेनाइजेशन. वी नीड टू स्ट्रेंथन अवर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसेस, systems and implementation of that. We need to create a organization. अब कौन सा क्लास होगा, वर्ल्ड क्लास होगा, इंडिया का क्लास होगा, दैट will come to know. लेकिन अभी our objective is to strengthen ourselves. We are competing top 10 company
practically top 5 companies of the country. उनसे टक्कर लेके हमको we need to continue in our operations with the same zeal, same results. So we need to focus on continual improvement. So we are planning to strengthen our organization and with a delegation of authority to the downline. So this is a major change is planning. Change means only operational methodology में change होगा. This is what we have planned it. क्योंकि now, believe me, we are now a big organization. Big organization मतलब क्या होता है? पैसे से ही थोड़ी बड़ा होता है. पैसे भी हैं, अपना टॉप लाइन भी है, ऑपरेशन भी बहुत हैं. We have number of employees is more. It's good. We are competing and we are executing in some 3 segments. So we are structuring everything accordingly. Hello. So this is what now this is the way we wanted to go now. The entire organization is, we are calling now a very structured way 3 verticals: the power sector, transportation infrastructure, and water infrastructure. So power means, again there is a 3 SBUs in power: substation, transmission line, and power distribution. In transportation infrastructure, railway and metro. And water infrastructure means water transmission and distribution and irrigation. Water treatment plant, a sewage treatment plant, everything will be falling under this category. So all the 3 segments will be having 4 individual departments, namely business development tendering, design and engineering, project execution, and quality and safety. These are the individual departments to that vertical. Then coming to the shared services, like corporate planning and monitoring group, centralized procurement group, and materials management, it will be the shared services. Shared services between these 3 verticals. Now then corporate services like finance, accounts and commercial, HR and admin, legal and company secretarial, these department will be a corporate department. Okay, so this is the way we just wanted to classify, and within a few weeks from now, we wanted to make a proper structure, it, announce it internally and externally. This is the way we wanted to organize ourselves. Next, please. I was just saying, what are the growth drivers for the Vikran? Abhi, this is a very high time in the country to, from business point of view, approximately 22 lakhs crore business per annum is going to invest in the infrastructure field itself. Opportunities बहुत है, तो अपने को to avail that opportunity we need to strengthen ourselves. That is this is the focus way we wanted to go and develop our organization. Second, our growth drivers, what for us is competence enhancement plan, means in strong team building, strengthening our team to cater extraction infrastructure and transportation infrastructure, and implement a management leadership program to create internal leaders. जो मैं आपको बात कर रहा था, we are talking to a HR consultant, and one of the team member will be joining to support Atul Gore and HR team, who will be driving all the soft HR practices and initiatives to appointing consultants and अपने को सबको how to strengthen ourselves to compete, and जो इंडिया की 4-5 कंपनी है उनके मुकाबले में हमको उससे बेटर HR खड़ा करके दिखाना है अभी. And then of course
when we grow, the growth capital is one of the very important aspects. So we need to bring growth capital either in the form of private equity, structured finance or IPO. So this exercise is just started, and hopefully some 1.5 years from now, we should be having some structured financing or any, nothing is concrete today, but we already set direction to move. Next please. This is the revenue what we had grown so far, and this is what next 4 years projection. So far, unless the COVID year, so far it is more than approximately 50% growth. Next year, this year also we are planning 50% growth, and the safer side, but 2014 onwards around 25 to 30% growth we are planning. So FY25, FY26 we will be 1500 crore company. So whatever we are setting the organization, whatever we are setting the processes, systems, including Vikran house, that is all is kept in mind कि बस 2016 में 1500 crore company होना है. Any excitement? 26. एक्साइटमेंट है इसमें कुछ? विश्वास है? विश्वास है? गुड. नेक्स्ट प्लीज. उसके लिए बहुत मेहनत करना है. मैं तो सिर्फ प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, सबको अपने को उतना मेहनत से काम करना है इसमें. एवरीबडी शुड फील कि व्हाट आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दिस. कोई किसी भी कुर्सी पर बैठा हो, right from site supervisor to the corporate office, everybody should think and have very defined his role in this, कि भाई मेरा रोल क्या होगा. 1500 करोड़ की कंपनी बना रहा हूं 3 साल में. You should ask yourself, उतने मेहनत से उसमें अंदर घुसो. Every year you should feel, yes, जो भी commitments, I'm coming to that, what all we need to improve ourselves. Next please. Today, this is the order book scenario. Today we have orders in hand is 927 crore, and we are lowest bidder in railway, water and one of the power projects that is putting together is 470 crore. So with this, by 15th of August, we are expected to have a 1400 crores order in place. So, but as we all know, FY24 will be our, means next financial year is our 1000 crore turnover. So at the beginning, means 1st of April to 23, we should have a order book of around 3000 crores in our hand. To meet that target and to prepare ourselves for the next 2 years, we need to have a 3000 crores order book in this financial year itself, and that is from where it is we are planning to book 1500 crores from power sector. There is a RDSS scheme from Government of India. So for the power distribution reforms, we are concentrating in that, and that around 1000 to 1200 crore minimum order book is expected from that scheme, and 300 balance will come from one 765 kV substation we are planning, and one minimum 400 kV transmission line from the power grid on central utility we are planning. So this is going to give us a 1500 crores order book in power sector. And the railway metro, whatever we have quoted today, we are expected to have around minimum 1000 crore order book, because our team they have already done a good job. Yogesh Patel and his team, they are all doing wonderful job. They have quoted around 2000 crore railway project already, including metro. We are expected to have a order booking of 1000 crore out of that. Apart from that, some more the tenders that we are quoting, that is in pipeline for the railway and railway particular.
Water segment, we already started. We are low, as I explained, we are lowest bidder of 240 crore for MP Jal Nigam, and 2-3 more order it is in pipeline. So we are expected to have a minimum 500 crores order book in water segment, which is giving us totaling of 3,000 crores in this financial year. Next, please. If we see how this the segment-wise revenue distribution is planned for next 4 years, current year 725 will come from 475 crores from power, and then from railway metro it comes for 50 crores, and water 200 crores. बहुत बड़ा target है, लेकिन our team is confident we will be able to achieve this. For the next year, the same figure will 1,000 means 50% will come from power sector, and rest of the things from power is taking lead next year. So that 300 this way. This is the how we are planning for next 4 years. Gradually, power, the growth will be comparatively less, whereas the transportation and water, we are planning expected minimum 50% growth in that. So put together it is 25 to 30% growth YOY basis. Next, please. So I was just explaining what we are strengthening our organization. We are empowering business vertical as a profit center head, and the decision of the vertical head will be the final. The bugs is going to stop on vertical head level. So, and authority and accountability lies with the vertical heads. And the vertical heads will be responsible for profitability and cash flow of their verticals. Corporate CPG, centralized procurement group, and vertical heads will collectively responsible to meet timelines for the project execution and budgetary figures. अभी तक तो जनरली क्या है कि प्रोक्योरमेंट वाला सोचता है कि मैंने प्रोक्योरमेंट मटेरियल डाल दिया, मेरा काम हो गया. उसको चिंता, उसको भी उतनी चिंता होना चाहिए कि मेरा सेल्स और कलेक्शन और मेरा कैश फ्लो में बैठ रहा है कि नहीं. द सेम टाइम द वर्टिकल हेड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली और प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर्स, प्रॉपर निगोशिएशन हो रहा है कि नहीं, एंड हाउ वी आर स्प्रेडिंग द टाइमली, वेदर वी आर ऑल मीटिंग द टाइमलाइन एंड ऑल. तो दिस इज अगेन collective votes will be placed to achieve the organization's figure. अभी we will not be working in the silos कि मैं तो प्रोक्योर, मेरा काम तो हो गया. कि 2 महीने पहले मैंने, अभी तक जो सबसे बड़ा क्लैश क्या है, 2 महीने पहले मैंने क्लियरेंस दिया है सर, कुछ नहीं हो रहा अभी वहां पे. तो मैंने वो एग्जीक्यूशन हेड अपना पल्ला झाड़ लेता है और प्रोक्योर वालों से ड्राइंग अप्रूवल लास्ट वीक हुई है, अभी स्टिल 5-6 अभी नहीं हुआ. तो मैंने क्या कि वी आर वर्किंग इन साइलोज. तो वो व्हेन दे इंटीग्रेट देमसेल्फ प्रॉपरली, देन result will start moving in. Not only that, integration is one thing, but when the responsibility lies on both of them, but the purchased person will also feel, yes, he is contributing in top line and bottom line, directly, not indirectly, directly. Then things will be on a faster pace. Now, another big view, as I explained you, we are giving responsibility to vertical heads and the core management committee. The CMC is going to take a major call in the organization. This includes operational guidelines will be formulated and reviewed by core management committee, and this core management committee will be the directors, vertical heads, VP accounts and commercial, finance head, HR head, and special invited representative from the various departments. So this will be every month, this core management committee will be meeting, and they will be taking all the detailed view of the operations. Apart from the business review meeting, what we will be conducting every month. Next, please. The core management committee, they will be functioning as setting the strategic direction to guide and direct the activity of the organization,
ensuring the effective management of the organization and its activity, and monitoring the activity of the organization to ensure they are in keeping with the founding principle, object and values of the organization. The core management committee is a very empowered committee, is going to come. The people are already there, only thing as in a formulated way they will be talking to each other. Next please. Now, just to clear the confusion what that CPMG will be doing, Corporate Planning and Monitoring Group, this is the presently this team is comprising of 3 to 4 members headed by Chaya Khan. So this team will be responsible for establishment of a strategic plan, yearly operation plan, and to design review mechanism, to initiate budgetary exercise, to establish all necessary systems and processes within the organization under the guidance of CMC members. Okay? So CMC as a collective we all will be taking call, और उसको implementation के लिए CPMG will be executing those actions to identify, design and conducting 3-stage periodic review system, weekly, monthly and quarterly, to identify operational gaps and to take corrective action within the system, to monitor execution, sales, collection and cash flow for the business operations. Next please. So it is just to motivate our team members this year what are the things they have done at operation level at project sites. So very important, this is the first ever our 400 kV transmission line has been charged, and the congratulations to you and all and the team MPPTCL Indore team, those they everybody has done a wonderful job. इसके पहले हमारे पास 220 kV में सिर्फ 12 किलोमीटर का प्री क्वालिफिकेशन था. With completion of this project, we got 90 kilometer 400 kV line worldwide. हम कभी भी अब कोई भी बड़ा ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं. So it is a big achievement, and we have a fantastic team at project site. This is how they have done a lot of highway crossing jobs. 4 घंटे का काम आधा घंटे में किया है. There was a lot of appreciation. And ये जो whatever the line the project they have executed, this was other company got failed to execute this project, so this got re-tendered. We took this, Vikran as a family, we took this responsibility and executed in time. Next please. This is again the various pictures of that, they crossing 765 kV transmission line, and that 82 meter height, the tower got executed under this project. Next please. To charge this line, there was a bay extension. This is for TS Transco. Okay. TS Transco project commissioning. Next please. This power gate, whatever projects we were doing initially, the substation 400 kV substation and 220 kV bay extensions, including 500 MVA transformer. मैं जो बोल रहा था 400 kV में we got pre-qualification. We charged 6 bays. So this also at the 400 kV size a big our pre-qualification. So we are just illustrating you those pictures in front of you. Next please. This entire work what you are seeing, that it was a very difficult project at Riva project, 400 kV substation Riva project. Hard soil में एकदम impossible को possible किया है team Vikran ने. So big clapping to them. Next please. This is 400 kV 500 MVA transformer be successfully charged at Muzaffarpur. Anil Patil, Sushoban and entire their team, they have not only commissioned all the projects of 400 kV, 220 kV substation, but now they are
They are planning for the financial closure of this project in next 2 months' time. So clapping to this team as well. 220 kV GIS being charged at Muzaffarpur. That is 400 kV substation, where we have also commissioned 220 kV gas insulated substation. So जैसा बोल रहे थे कि 220 kV GIS में हम गए हैं, 400 kV में गए हैं. So this is picture of that. Next please. 400 kV Bina team, where 80 MVAR shunt reactors and bay extension of 400 kV. This team also MPPTCL, Sanjay Sherekar and HO Anil Manju and this Rohan Thakur. Rohan Thakur नाराज हो जाता है, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ बार बार. So Rohan Thakur, where are you Rohan? Can you raise your hand? Yes. Are you happy now? The entire nation, the Vikran team is listening to you. So Rohan and apart from Mukesh at Bina project site. Mukesh na? Mukesh, we have done a wonderful job all this. So माने ऐसा सिचुएशन आया था कि कॉम्पिटिटर्स और दूसरे लोगों ने एक एक प्रोजेक्ट में जाके माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा, इन्होंने कहीं एक प्रोजेक्ट में गलती निकाल दें, लेकिन किसी को कुछ गलती मिली नहीं है इनके प्रोजेक्ट साइड पे. तो वेरी गुड जॉब डन टीम, कंग्रेचुलेशंस. सेम वे सांबा से लेके जालंधर, पटियाला, हमने तो सब नाम सुना था दूसरे रूप में, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने प्रोजेक्ट अच्छे एग्जीक्यूट किए हैं. यस प्लीज. अब ये कथा है बिहार की. मुकेश, अभी यू जस्ट रीड दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बिहार द power distribution project has really given a big direction and dimension to the growth of Vikran family. So Mukesh Kanodia and his team, if you see out of total gross sale of approximately 2,000 crore till June 22, and then almost 50% has come alone from Bihar. एक तालियां जोरदार बनती हैं. They have stepped in Bihar with one project, and within a few months time, ये और विवेक एंड पूरी टीम, यार क्या टीम है बिहार की टीम. आई लव दिस बिहार टीम. आपको सबको प्यार करता हूं मैं, लेकिन बिहार की टीम की बात ही अलग है. They have done a really, they have entered with one project, और वहां पे गब्बर सिंह का रोल कर दिया इन्होंने. वहां पे खौफ रहता था बिहार में हमेशा कि अपना काम खत्म कर दो नहीं तो विकरान आ जाएगा. बिलीव मी, इन द एनर्जी सेक्रेटरी लेवल मीटिंग दे यूज्ड टू टॉक कि बॉस तुम करो नहीं तो विक्रांत को दे देंगे, और वही हुआ. एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं. दे हैव एंटर्ड इन 14 डिस्ट्रिक्ट, दे हैव कैप्चर्ड, छापामारी कर ली 14 प्रोजेक्ट्स में, और इन लोगों ने ये इतिहास रच दिया. अभी अपने पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्री क्वालिफिकेशन है इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन. एक बार और ताली हो जाए. This was done through 16 projects. They have closed, they have started collecting the retention money also, है ना. तो एक दो को छोड़ के all things is in line now. So this Mukesh Kanodia and team, they are working hard. आपको कब तक पूरा सितंबर तक पूरा रिटेंशन बाकी का भी आ जाएगा? कब तक आ जाएगा? सितंबर से आ जाएगा. ठीक है, गुड, ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट प्लीज. So now, as we were saying, there is a continual improvement, and our team, we are all talking to the areas where we can improve it. Ashish Bhayati has done a that he has entered now in the internally what is happening, where are the gaps in the SAP implementation, internal accounts control related matters.
जो भी ऑपरेशन में कहाँ पे अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं. So we had one or two meetings, and he has given a lot of suggestions, and based on those suggestions and with the help of our team, we started our improvement plans. So this is the 3 slides which I am showing. This is this initiative is taken by Ashish Bhayati along with all the execution heads and other persons, including his own team like Atish Maheshwari and all. They all sat together to identify certain areas where need to immediately pay attention to improve ourselves. One of the important thing is SAP. SAP uses of SAP has to increase. SAP training has to be given at site level and approach, and then system improvisation across the level, it has to be done. Site involvement has to be enhanced and improved, and what the revenue versus cost month on month basis, how it has to be tracked and to bring on that कि बहुत सेल बुक हो गया, कॉस्ट बुक नहीं हुई, एक महीने में लॉस दिख रहा है, दूसरे में प्रॉफिट दिख रहा है, ऐसा नहीं. एकदम month to month we should be able to review and should get a correct data, and at the same time team, whether it is site team, whether it is site accounts team, HO team, everybody has to work in this direction for the improvisation. Next please. Now August month onwards, as I explain you, before we formulate the first core committee, core management CMC meeting, तो उसके पहले सारे HODs वो all the processes system सब है, they will discuss, they will close the discussion and they will upload by 15th of August. ये पूरे system में डाल के then we are starting our monthly business review meeting, or by that time SAP will also get support us. So all the data directly which is required to present in BRM has to come from SAP. This is what it has been planned. Ashish, Atish Maheshwari, Ashish Bhayati and all the team members has to put themselves 100% to ensure that we should as committed 15th August onwards, and of course from the CPMG we should finally design, declare and upload all these things what I am going to talk on your behalf has to be then placed by 15th of August, Monday. Hello? मैं तो सिर्फ बोल के चला जाऊंगा, करना आपको ये, ठीक है ना? क्या बात है, कोई कमिटमेंट नहीं आ रहा है? यस? बहुत बड़ा गैप है अभी. ऐसे भी हमने वी हैव इन्वेस्टेड ह्यूज, उसमें काफी गैप है. ये ऑफ कोर्स दिस इज अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस, बट स्टिल एक जोर का अभी धक्का देना है अपने को. अभिषेक उठ के जोर से बोल दे यस हो जाएगा, खड़े होके बोलो, उसको करना है. ये भाई साहब के हाथ में टार्च है, ये कभी कभी बुझा देते हैं वो टार्च को तो गड़बड़ हो जाती है. So this is what we are seriously planning. 15th अगस्त तक कर देंगे, नहीं तो आशीष जो है बहुत डिसअपॉइंट हो जाएगा. अब आशीष को मैंने कमिट किया ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू, यस 15th अगस्त हम कर देंगे. मुकेश बोलो यस. संजय, अनिल पाटिल और योर इंटायर टीम सब रेज करो. पीपीएमसी मेंबर्स, प्रोक्योरमेंट मेंबर्स, एसएपी टीम मेंबर्स. क्या डेट है? 15 अगस्त को हमको पूरा माने स्वतंत्र दिवस तभी मनेंगे जब अपना सिस्टम 100% थ्रू होके अपलोड कर दोगे आप. अब क्या करना है आप इंटरनल पूरा देख लेना एक एक. ये लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस कहां कहां क्या क्या करना है. नाउ कमिंग टू दिस जीरो अपना जो बेस बजट जो है, इसके प्रिपरेशन ऑफ द बजट, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग. CPMG and with Rajesh, they are finalizing, they are putting that, they are also uploading this, and the target date is the same, 15 August तक. Chaya Khan and your team, Sushovan, Aarti Chogle, big yes,
Okay, good. Next, please. Internal control, very, very important aspects of to improve our business operations. So, formal internal audit team consists of engineer and CA, has to move immediately, is wherever required at site and all. Strengthening of PPMC team, as I explained, कि ये तो continuous process है, PPMC team में भी हमको और strengthening करना है, चाहे वो water segment हो और यहाँ पे हो power में भी. And then we are existing team, we want them to take charge, and this project monitoring system, what we had a meeting last week, उसका पूरा अच्छे से ट्रेनिंग देके सब लोग, this is also one of the objective what they have said, कि all the current project has to be on what? MS project में होंगे, ठीक है? So that जैसे अविनाश सर हमेशा बोलते रहते हैं कि बॉस क्या है अविनाश सर का टैगलाइन? एस कर और क्रिटिकल पाथ. ये अविनाश सर के ये दो ड्रीम है. जिस दिन तुम सब लोग एक एक आदमी शुड एबल टू गिव ऑन फिंगर टिप्स कि यस ये मेरा एस करो है इस प्रोजेक्ट में, तीनों मेजर डायमेंशन एट वन क्लास यू कैन वन एट ए ग्लांस यू कैन एबल टू सी, और दिस इज माय क्रिटिकल पाथ. यहाँ पे ये डाइव उस पर अटैक करते जाओ, अपन कहीं भी डीरेल होने की जरूरत नहीं है. तो अविनाश सर का जो टाइम दिया है ऑन मैंने उनको बोल दिया कि 15 अगस्त हो जाएगा ना. सेम तारीख एक ही है, वो तीन काम अलग अलग बोल रहा हूं वो, लेकिन काम एक ही है. एवरीथिंग नाउ आज इसलिए तुम चार्ज आज भी हो जाना, रात को सब चार्ज हो जाओगे. देन वी हैव 15 अगस्त इज टारगेट. 15 अगस्त इज मंडे, ठीक है ना? चलो. So, as I explained, very first target, we have 4 targets. मोटा मोटा लेवल 1 अपन L1 L2 L3 बोलते हैं ना अपन शेड्यूल में. लेवल 1 के टारगेट है कि भैया वी नीड टू कंटिन्यूअली स्ट्रेंथन अवर प्रोसेसेस, सिस्टम, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, टारगेट नहीं है, लेकिन ये इसको वी शुड एबल टू सी विजिबल रिजल्ट्स इन दिस. To make Vikran great place to work by FY24, 1.5 साल बचा है अभी, and to achieve sale of 1000 crore by FY24, 1550 by 2026. अगर मैं वो फिगर नीचे का बॉटम लाइन का नहीं बोलूंगा तो नकुल सर भी नाराज हो जाएंगे. तो ये 1000 के नीचे का वो नीचे का फिगर क्या है? 100 है ना? तो 2024 1000 by 100 और 2026 1550 डिवाइडेड बाय 160. कौन बोल रहा है? छाया ही बोलेगा यार, कैसे काम चलेगा यार. बहुत जरूरी है ये आत्मसात कर लो. ये फिगर यहां पे आना चाहिए. नकुल साहब बहुत नाराज हो जाते हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि सब टॉप लाइन दिखाते रहते हो, सबको भ्रमित कर रहे हो. व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग ऑन द बॉटम लाइन? मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू टॉक बॉटम लाइन, दे देमसेल्फ विल टेल एवरीबॉडी कि बॉटम लाइन ये रहेगी. तो तीनों वर्टिकल हेड्स को बोलेंगे भैया तुम अभी अपन इफ यू सी जो 1500 करोड़ अपन FY26 बोल रहे हैं, तो मोटा मोटी उसमें 500 करोड़ तीनों वर्टिकल्स का है. तो मैंने क्या है 50 करोड़, गब्बर सिंह वाला डायलॉग, 50 करोड़ हर वर्टिकल हेड ने देना है. मैं जो वर्टिकल हेड्स के इंटरव्यू ले रहा हूं उनको मैं यही फिगर बोल रहा हूं. मुझे नहीं मालूम, बस तुमको 50 करोड़ लाके देना है मुझे FY26 में. बिलीव मी. ये दिमाग में रखना है आपने. नेक्स्ट प्लीज. हो गया. लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं, ठीक है. अभी I need to talk to in general things all of you. कितना टाइम हो गया अभी? कितना टाइम और बचा है मेरे को? मेरी घड़ी में पानी चला गया है? 5:50 हुआ है ना? कितने मिनट मेरे पास हैं ऑर्गेनाइजर्स? अतुल 15-20 15 की 20 नहीं यार 15 मिनट और लूंगा. अब ये बंद, हाँ ये ना
बहुत बेसिक चीज हम बात करने वाले हैं। पानी पी लेता हूं। होमवर्क करके लाया हूं। कोई भी मीटिंग और डिस्कशन के पहले इफ यू आर गोइंग विदाउट होमवर्क, अपने को बचपन से आदत लगाइए ना, प्राइमरी क्लास से घर में पेरेंट्स ने, टीचर्स ने होमवर्क करके जाने का। अच्छी बात है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, अपन इसको इतना निग्लेक्ट करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं बच्चों जैसी, लेकिन बहुत जरूरी है। मेरे 32 साल का एक्सपीरियंस का, और मैंने जितनों भी आई हैव सीन वर्ल्ड क्लास बिजनेस लीडर, आई हैव मेट देम। कुछ कॉमन चीजें मैंने उनको ऑब्जर्व की हैं, पढ़ा है, सुना है, उसको मैं यहां पे लिख के लेके आया हूं। एंड आई एम गोइंग टू टेक वन क्लास ऑफ ऑल ऑफ यू। HR, वो जो हम बात कर रहे थे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स वी आर प्लानिंग। पहला सेशन मैं खुद से शुरू करूंने वाला। उससे क्या फायदा होगा कि मेरा खुद की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। होमवर्क करके आते हैं ना अपन भाई, जो आप किसी को बोलते हो सबसे पहले खुद पे इंप्लीमेंट करते हो, बराबर? तो वो होमवर्क, दैट फर्स्ट क्लास, फर्स्ट tutorial class I am going to take of 1 hour, any Saturday afternoon hours, where I will be hand holding all of you to set your goals. 3 types of goals: your professional goals, your personal goals. Personal means your family related your goals, and third goals of you as an individual. एक workshop करेंगे। I am going to handhold all of you for that workshop. लेकिन before that workshop, तो बेसिक चीजें जो हम अपनी डे टू डे में, whatever positive attribute you have, whatever positive attitude you have with you, whatever the sound processes system you have within you, you can't give a strong result unless you have these basic things in your personal traits. So what are those? This all governs by habits. Habits. नैतिक शिक्षा पढ़ी अपने प्राइमरी में? नैतिक शिक्षा इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। नैतिक शिक्षा, यस प्लीज। मॉरल साइंस कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोलो आज हम CMD ने आज हमको मॉरल साइंस की क्लास ली, बहुत जरूरी है। वी ऑल नो, एवरी वन ऑफ यू नो दैट मॉरल साइंस, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू हैबिट्स, गुड हैबिट्स। अनलेस वी फॉर्म ए गुड हैबिट्स, रिजल्ट में वो शार्पनेस आती ही नहीं। अनलेस यू डू हार्ड वर्क, आपका इंटेलिजेंस लेवल कितना भी क्यों हो, वो रिजल्ट में एक्यूरेसी नहीं आती। अनलेस यू हैव दैट सॉफ्ट डिसिप्लिन इन योर डे टू डे लाइफ, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू कम एज पर यू। बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। आई विल रिफर माई फादर हियर। माई फादर वॉज ए स्कूल टीचर। वी लॉस इन 4 years बैक। उन्होंने हमको, मुझे और अविनाश सर को, सबको जो चीज सिखाई थी, आप हमारे सबके पेरेंट्स सबको सिखाते हैं, मैं उनका एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि वो हमारे ट्रिपल गुरु थे। फादर वैसे प्रथम गुरु होता है, फिर शिक्षक भी थे, हमको क्लास में सिखाया, फिर वो आध्यात्मिक गुरु भी रहे। तो हर तरह से उन्होंने हमको शिक्षा दीक्षा दी है। तो मेरा 32 साल का जो निचोड़ मैं बता रहा हूं आपको, कि मैंने जो देखा है, समझा है, पढ़ा है, ऑब्जर्व किया है, मैनेजमेंट गुरुज को दिया है, वर्ल्ड बिजनेस लीडर्स को आई नोटिस, आई लिसन टू देम, आई कीनली ऑब्जर्व देयर लीडरशिप क्वालिटीज। लेकिन जो बेसिक चीज जो एवरीबडी इज टॉकिंग,
आई एम जस्ट गोइंग टू नरेट इन फ्रंट ऑफ यू. गुड हैबिट्स क्या होती हैं जनरली? आप जो धीरे जो काम करते जाते हो ना, आप उसमें कंसिस्टेंसी करोगे ना, एक्शन वो हैबिट में बन जाती. कोई भी चीज आप 21 दिन रोज कर लो, साइकोलॉजिस्ट बोलते हो आपके हैबिट में हो जाएगी. जब डॉक्टर्स आपको कहीं कहीं आप जिसके भी कोई लत लग जाती है ना, आप उसके वजह से तुम 15 दिन 1 वीक और बढ़ाता है, 22-30 दिन आप कुछ चीज को नहीं करोगे तो वो छूट जाएगी. 21 दिन आप कोई अच्छी प्रैक्टिस कर लो, रोज छोटा 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 बहुत छोटी छोटी चीज, वो आपकी हैबिट बन जाएगी. सो आई एम गोइंग टू टॉक यू सम 6 गुड हैबिट्स विच एवरी प्रोफेशनल मस्ट हैव. बहुत छोटी चीज है. लेट अस प्रैक्टिस, स्टार्ट प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे. सेट गोल्स. बेसिक चीज आपकी, गोल सेट करो. प्लान एवरी गोल सेट. पहली हैबिट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं. प्लान एवरी डे इन राइटिंग ऑन पेपर. बहुत अच्छी चीज जो मेरे गुरु ने मुझे बताई, मैं स्टिल आई एम डूइंग एवरी डे विदाउट फेल. 10-15 मिनट यही करता हूं. मैं सुबह 3:30 बजे जब उठता हूं तो मुझे दिमाग में यह रहता है कि आज मुझे क्या करना है. आई राइट डाउन, इमीडिएट लिखता हूं उसको पीस ऑफ पेपर पे. दूसरा काम बाद में करता हूं. अभी तक ये 20 साल से हैबिट है मेरी, लिखता हूं मैं. वी आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट. वी डोंट वॉन्ट एनीबडी टू चैलेंज मी. साहब एवरीथिंग इज हियर. कितने लोग बोलते हैं अपन सब याद है, सब क्या बात कर रहे हैं प्राइवेट. एवरीथिंग इज हियर. आई ऑपरेट कंप्यूटर्स. कुछ भी करो आप, प्लीज नोट डाउन ऑन पीस ऑफ पेपर. इट वर्क्स. इट इज ए मिरेकल. इट इज ए मिरेकल. आई एम टेलिंग. आप लिखते हो ना, वंस यू राइट इट, शार्पनेस धीरे धीरे आएगी. 2-4 दिन बाद आएगी, 5 दिन बाद आएगी. Then you will start changing your priorities. Priorities you change every day, every week you change your priorities. How this happens? आप में sharpness आ जाती है, आप में clarity आ जाएगी. इसको मैंने लिखा यार, इससे पहले ये होगा, इससे better result मैंने write down on a piece of paper, prioritize it. जैसे 10 काम लिखे हैं ना आपने, तो 10 काम में से 3 एक्टिविटी ऐसी रहेंगी, 3 काम जो आपको करना है. दिस गिव्स यू 80% वेटेज रिजल्ट. उनमें से वो 3 कौन सी हैं? इट इज वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल टू अटैक ऑल द 10 एवरी डे. 3 करो, 3 प्रायोरिटाइज कर लो. आई एम टॉकिंग ऑल द लेवल्स. मैं पूरी एक एक्सरसाइज कर रहा हूं गोल सेटिंग की, लेकिन अभी सिर्फ हिंट दे रहा हूं आपको. विच आर 6 गुड हैबिट वी शुड इनकलकेट इन आवर डे टू डे लाइफ. दिस इज इन्वेस्टमेंट. मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं. यू ऑल नो, फिर भी बता रहा हूं मैं, बहुत जरूरी है. 3 को अटैक करो आप. फिर बचा हुआ क्या करें? नेक्स्ट डे बचा हुआ जो आपने 10 लिखी, 5 लिखी, 4 लिखी, 2 हो गई, दूसरे दिन फिर लिखो जो रह गई है. लेट इट कैरी फॉरवर्ड फॉर ए मंथ. डोंट वरी, बट आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होगी वो चीज. प्लीज डू दिस एक्सरसाइज. प्रायोरिटी करो एंड कंप्लीट इट बाय एंड ऑफ डे. दिस इज गोइंग, जो ये छोटी एक्सरसाइज, the researcher says this is going to triplicate your productivity. Yogesh, it is going to triplicate your productivity. 90% of us, हम लिख लेते हैं वैसे डायरी में, जो भूल न जाए उसके लिए लिखते हैं. हेलो, पर्पस ठीक है, लेकिन यहां पर्पस दूसरा है. You note it down, focus it, prioritize it, attack it, and get the things done. At least with these 3, you are going to solve 80% of your result. Goal setting हो गया, basic चीज. Result orientation. I am going to talk 6 habit, good habit.
रिजल्ट ओरिएंटेशन। आपका क्या है दिमाग में जो अपन एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी व्हेन वी आर डूइंग कीपिंग सम रिजल्ट इन माइंड। करते हैं ना आप, रिजल्ट के लिए ही करते हैं। वो धीरे धीरे हैबिट अपने दिमाग में डाल दो, रिजल्ट ओरिएंटेशन हैबिट। क्या होगा इससे? और जो मुझे ये करने के लिए क्या करना है, एक्टिविटी कौन कौन सी है, ये दिखाने के लिए कर रहा हूं या मैं खुद के लिए कर रहा हूं, तो वो माने ट्राई टू लिंक विद द रिजल्ट और आपका मिरेकल होना शुरू हो जाएगा। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। एक अपने एचआर की मैडम थी फाल्गुनी, वो एक दिन लेके आई कि 3 साल बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, पुरानी डायरी, सर मिरेकल इज हैपेंड। मैंने कहा क्या हो गया मैडम? वॉट एवर वी आर रिटन दैट डे, एक पुरानी उसको कॉपी लिखी थी, हमने ऐसा लिखते थे इतने इतने इतना में ये करेंगे, इतने इतने टाइम तक ये करेंगे, इतने हम सब स्टेशन कर लेंगे, ट्रांसमिट मैन पावर इतना इतना हो जाएगा, सब कुछ वी यूज्ड टू राइट। अभी भी लिखता हूं मैं, राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द डे द कंपनी, नवंबर 15 ऑनवर्ड्स, हर महीने का मेरे पास बुकलेट रखी हुई है, एवरी डे वी राइट, और सब उसमें लिखा है। तो कमाल की बात क्या है, जो उसमें लिखा था वो पॉइंट वाइज बताए, जितने हमने 6-7 पॉइंट लिखे थे वो सब हमने अचीव किए। यस, क्योंकि दिस इज अ गुड हैबिट। अपन शार्पन करते रहते हैं अपने प्रायोरिटीज। देखने सुनने में बहुत अनकॉमन लगता है कि कौन सी बड़ी, लेकिन ये मिरेकल्स होते हैं इससे। थर्ड गुड क्वालिटी इज पीपल ओरिएंटेशन। Irrespective of what position you are there, irrespective of what professional you are there, irrespective of which part of world or orbit you are staying here, if you are people oriented, आपके काम बहुत आसानी से होंगे। What is people orientation? एक एटीट्यूड होता है, how I can help this gentleman. Listen carefully. What is people orientation? How I can help other gentleman, other person. That is people oriented. People orientation का मतलब यह नहीं है कि मैं इससे मेरा कैसे काम निकालूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान से सुनो। When you start developing this habit, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं 6 हैबिटों की बात बता रहा हूं, ये तीसरी हैबिट पे अभी यहां है। पीपल ओरिएंटेशन माने आप लोगों को हेल्प करना शुरू करोगे, उनके हैंड होल्डिंग शुरू करोगे, चाहे आपका बॉस हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे सबॉर्डिनेट हो, चाहे पीयर्स हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट का हो, ये है वो है, तो वो क्या है, अपने आप उधर सामने से धीरे धीरे हेल्प मिलना आपको शुरू हो जाएगी। तो वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बढ़ना शुरू हो जाएगी। द मोमेंट यू कीप इट दैट कि यार मैं इससे काम निकालना है, बाय हायरिंग और फायरिंग, हम करे सो कहा, आई एम बॉस, लिसन टू मी, डू दिस अदरवाइज गेट आउट, ये एटीट्यूड से कभी काम नहीं होते। एक लिमिट के बाद जब तक वो कुर्सी पे है वो सुनेगा आपको, लेकिन ये पीपल ओरिएंटेशन का जो आपकी हेल्प होगी वो जिंदगी भर याद करेगा, वेदर यू आर हिज बॉस और नो बॉस, वेदर यू आर नेबर और नो नेबर, वेदर ही स्टेज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ही कीप ऑन रिमेंबरिंग एंड सेंड यू ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स माने क्या होता है? पॉजिटिव वाइब्रेशंस, आशीर्वाद, गुडविल, समथिंग गुड फॉर यू, दिस वाइब्रेशंस आर कमिंग टुवर्ड्स यू विद अ पॉजिटिव, positive vibrations are coming, and you, if you are positive, you are catching those vibrations. This is a science. So develop this habit, people orientation. If I think I am okay, you are not okay, बड़ी मैं ये हूं, मैं IITN हूं, मैं IIM वाला हूं, मैं I am world class यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूं, सब ठीक है, it's good. But you need to have a people orientation. ये हैबिट डेवलप करना है। कैसे होगी? धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगी।
You start doing this. You start helping others. Automatic help मिलेगी आपको. You start respecting. Automatically you will get the respect. चीजें बढ़ेंगी. आपको मिलेगा और मिरेकल होंगे. आपको हेल्प मिलेगी. हेलो, बोर कर रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट. सो वी हैव डिस्कस सो फार 3 हैबिट्स: गोल सेटिंग, रिजल्ट ओरिएंटेशन, pupil orientation, and 4th, which is very very important, it should be first, but by mistake I have written here at 4th, that is health orientation. Health orientation. क्या है हेल्थ ओरिएंटेशन? अपनी सेहत के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना. फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ. अच्छा अन्न, अच्छा मन, अच्छा खाओ, अच्छा मन रखो. डू प्रॉपर मेडिटेशन. राजयोग करो 20 मिनट का. आजकल तो बहुत मॉडर्न मेडिटेशंस आते हैं. इफ यू आर इन स्ट्रेस, यू आर नॉट एबल टू स्लीप फॉर 2-3 days, डू योग निद्रा 40 minutes. गो डेली वॉकिंग 20 minutes, 30 minutes, जब भी टाइम मिले वॉक करो. 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वॉकिंग करो. टाइम मिलता है 5-7 मिनट एक्सरसाइज भी करो. सबसे बड़ा एनिमी कौन होता है? खुद, अपन. सबसे बड़ा एक्सक्यूज क्या है? टाइम नहीं है. आई एम सो पुअर, साला मेरे पास टाइम नहीं है. तो ये नेगेटिविटी आना के नहीं देना दिमाग में कि टाइम नहीं है, दिस, ये नहीं है, वो नहीं है. दिस इज द बिगेस्ट एनिमी. ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ही इज नॉट ओके, ये से या सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, या हो ही नहीं सकता. दिस इज योर बिगेस्ट एनिमी. दिस क्रिएट्स लॉट ऑफ नेगेटिविटी. ऐसे लोगों से दूर रहने का. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हेल्थ. This is going to give you when you do meditation, peacefulness. मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है. कितने माने आज के माने जो आप देखो बड़े बड़े, जब बड़े बड़े लोगों को सुनते हो, बड़े कौन? बिजनेस लीडर्स, वर्ल्ड क्लास बिजनेस लीडर आई एम टॉकिंग विद. सीईओ कोचेस को सुनते हो, आध्यात्मिक गुरु को सुनते हो. व्हाट दे से, सुबह उठते से ही कीप योरसेल्फ, मोबाइल को हाथ मत लगाओ 20-25 मिनट. मैंने रूल बना दिया, सुबह उठ के 1 घंटे मोबाइल हाथ ही नहीं लगाता. 4:30 बजे जब मेरी चाय हो जाती, उसके बाद मैं मोबाइल का हाथ लगाता हूं. 3:30 to 4:30 सबसे बेस्ट टाइम है. आप कितना ही रिसर्च कर दो, मेडिटेशन के लिए बेस्ट टाइम है 3:20 to 3:40 इन द मॉर्निंग. मरवा दिया सब आपने, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत. आई एम जस्ट टेलिंग यू. 20-30 minutes meditation करो. It is going to cool your brain, mind. You will be feeling empowering yourself slowly. इतना पावर आएगा, you can't believe it. आपके सारे काम अच्छे. अपने पेरेंट्स ने फालतू थोड़ी सिखाया अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज. सिखाया है ना वर्ल्ड वाइड. बहुत जरूरी है. अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना. मेडिटेशन करो. तो 3 थिंग्स, जो 3 विचार सबसे पहले सुबह मेडिटेशन. मैंने सबको देखा है. मैंने वॉरेन बफेट का भी मैंने पढ़ा है. आई एम द पावरफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम फियरलेस सोल. मेडिटेशन करो 20-30 मिनट्स. नेगेटिविटी बाहर जाएगी धीरे धीरे. कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. और क्या होगा? और क्या होगा? मिरेकल्स क्या होंगे? जो आप सोचोगे धीरे धीरे वही आपके अनकॉन्शियस माइंड में घूमेगा. और क्या होगा? वॉट एवर यूर प्लानिंग, यूर राइटिंग, यूर सेटिंग द गोल्स, you surprisingly your all actions will be moving towards that direction and
you are 100% going to achieve those results. हम होंगे कामयाब, no doubt. Not 99.9, it is 100%. So, health orientation. Fifth, stay honest. Stay honest with yourself, with the society, with whatever job you are doing, with your health, with your mind, with your day-to-day work. Stay honest. थोड़ा करो, अच्छा करो, अच्छे honest. माने whatever you are supposed to, I am supposed to do this 3 activities today. Stay honest to that. The moment you start giving excuses to yourself, I am repeating the word. The moment you start giving excuses to yourself, nobody can help you. Nobody. No Adhyatmic guru, no business guru, no CEO coach, neither your friends, relatives, nobody can help you. Who can help you? उतना ध्यान रखो. So be honest with yourself. अगर मुझे नहीं करना है तो नहीं करना, कोई बात नहीं. Nobody is going to force it. But you should know at least what I am supposed to do, what I am planning to do. Chata, sixth and last point from my side, self-discipline. Do I need to mention and explain that? जो सोचा है, जो करना है, सेल्फ डिसिप्लिन. ये 6 छोटे धीरे धीरे आप करेंगे ना, आपको आदत बन, हैबिट्स. 6 basic habits of most powerful personality of universe. Forget of the world. Universe I am talking. ये 6 चीजें हैं. बेसिक इसको 5 दिन आप झूठा झूठा करोगे अपनी, चलेगा. 2-3 दिन और ले लो. स्टार्ट 1%, 2%, 5%, 10%. धीरे धीरे आप उसको करते जाओगे. इफ नॉट इन 21 डेज, 2 महीने में हैबिट में आ जाएगा. जब आपके हैबिट में आ गया तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके एक्शंस में आ जाएगा. थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर पेशेंस इन लिसनिंग टू मी. ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स.